Hello friends, welcome to our session on career counseling called Pratibha Samvardhan, and today we are discussing on one of the most interesting topics, that is transition from school to college. Believe me, your school days are the most wonderful years of your life, and your college days are the another wonderful days because they are going to be with you throughout life, because whatever you learn, you earn during your college days are going to be there with you. Now, we are talking about transition, and this transition is very, very important to be understood by all of us. Friends, if you have any question pertaining to our today's topic, do call us. Our toll-free number is 1-800-110-430. I repeat, our number is 1-800-110-430. And we would like to tell you all that we have with us in our studios Miss Urvashi Sareen, and she is there to give answers to your questions. She is a counseling psychologist who is persistently working only for you so that all your queries are handled with care. So friends, let's welcome our guest, Miss Sareen. Hello ma'am, welcome to the lecture. Thank you. Though we have discussed a lot in the previous session, and there are lots and lots more questions which are appearing into our minds. Now, life is not what we think. जब तक स्कूल में होते हैं तो सोचते हैं ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे. But our world automatically changes once our school is finished off. True. Some students, some kids, they are very focused what they want in life. Some students, they are little unaware कि करना क्या है. चलो ठीक है, अगर कॉलेज खत्म शुरू होगा तो हम इस कोर्स में एनरोल कर लेंगे. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं. Somehow they are not able to land or are not able to crack those examinations. पर फिर भी एक प्रेशर होता है, कुछ तो जिंदगी में करना है. चलो किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, चलो कुछ तो कर लेते हैं. अब कुछ तो कर लेते हैं की वजह से there are lots of changes in one's mind. और sometimes ऐसा भी देखा गया है, parents force their kids. तुमको ये नहीं ये करना है, नहीं इंजीनियरिंग ही करना है, और हम हाफ हार्टेड कंसेंट के साथ उस कोर्स में एनरोल हो जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, बट समहाउ वी आर नॉट हैप्पी. इन दैट कंडीशन, व्हाट इज टू बी डन? See, that is where, again, like I've been saying, find the, right fitment. As a individual, we have aptitude, intelligence, interest, and personality. If there is 100% mapping of this and you have been able to identify with all the support that you have, your aptitude, your interest, everything matches, nothing like it. Life will be very smooth for you, and there are some fortunate people who are then spoiled for choices. अच्छा, IIT खड़गपुर से करूँ या IIT दिल्ली से करूँ? So वो भी एक conflict हो सकता है. But yes, those are different set of things. A lot of times it happens that मेरा इंटरेस्ट तो है कि मैं बनूं एक फैशन डिज़ाइनर, लेकिन मेरे घर में आधी जनता इंजीनियर है और आधी डॉक्टर है, और इसीलिए मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है. बट मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा इंजीनियर बनूंगा अगर बनूंगा भी तो. सो हाउ डू आई डील विद दिस कॉन्फ्लिक्ट? आई थिंक फर्स्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी असर्टिव. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू पुश पीपल इफ़ यू आर कन्विंस्ड with your decision कि मुझे क्या करना है. अगर आपको वो क्लैरिटी है तो आप हमेशा अपनी पहले सोचिए और बाकियों को कन्विंस करने की कोशिश करिए. और अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं, नॉट श्योर एंड दे जस्ट एंड अप टेकिंग समथिंग. सो अगेन यू विल हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन. डोंट ब्लॉक एनी एवेन्यू फॉर योर सेल्फ कि ये तो मैं नहीं कर सकता या कर सकती. Always try it out. If you have landed up in a certain situation and you don't want to waste your years in exploring, try making the most of it. If you look at every challenge, it will become an opportunity, and who knows, that you develop a skill in that. So it's about putting things in a certain perspective to yourself rather than getting bogged down by it. और हम हमेशा ये कहते हैं कि डोंट वाइल इट इज़ गुड टू बी फोकस्ड एंड हैव अ प्लान ए, लेकिन प्लान बी के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि लाइफ विल नॉट ऑलवेज गिव यू व्हाट यू वांटेड. सो व्हाट यू think you can do is very good if you get. If not, so what next? और कई बारी criticality is in making the second choice work for you.
That is Very the true. challenge. So, yeah. So one should accept these challenges in terms of failures, because failure sometimes, as you said, it takes you some other road, and then you realize कि जो नहीं हुआ ना वो बहुत अच्छा हुआ, Yes. क्योंकि जो हो रहा है ये बहुत ज्यादा अच्छा है. Yes. This is what we need to talk to ourselves. The kids need to talk to their parents. Yes. क्योंकि कभी कभी बच्चों को पेरेंट्स को कंसोल करना पड़ता है. Yes. कि this is not the right thing, this is not the right place. I'm not this. I want to be this. So जो कम्युनिकेशन है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, और एक बच्चे का खुद के साथ कम्युनिकेशन, और एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कम्युनिकेशन, अच्छा इसमें नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कुछ और ट्राई करते हैं. वी ऑल्सो हैव सीन दैट व्हेन वी एंटर इनटू द बिगर वर्ल्ड दैट इज कॉलेज, वहां हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा. बिल्कुल. So at that point of time, what we should do, because influence to an extent is good, but to an extent it is bad. Because हो सकता है कि वो जो क्वालिटीज उसमें है वो आप में ना हो, या उससे ज्यादा क्वालिटीज उस एग्जाम को या उस तरफ जाने में आप में ज्यादा हैं. So how you should critically analyze yourself? Yes, so I think one of the very important skills is self-awareness. And the more you are aware about your own strengths and weaknesses, you will be able to make better decisions. क्योंकि हर बच्चा, हर इंसान यूनिक है. अगर हम हमेशा अपनी कमियों को ही देखकर कंपेयर करेंगे कि वो तो बहुत अच्छा कर लेगा, मैं तो नहीं कर सकता, तो एक हीन भावना आ जाती है, जिससे एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और बहुत सारी और साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस हम इनवाइट कर लेते हैं. तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर हम शुरू से ही एक एक इनवर्ड जर्नी करें टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. Maybe my friend is good at something, I can appreciate him for that, and I'm good at something else. Friendship अपनी जगह है, profession, career अपनी जगह है. तो इन चीज़ों को कोशिश करना चाहिए कि ये हमारे को नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना करें. मैं हमेशा बच्चों से यही बोलती हूँ कि अगर कोई आपका सच्चा दोस्त है तो वो आपको कभी भी पुल डाउन करके आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो वो दोस्त नहीं है. Find better friends who can give you better influence. That's how I feel. Very true. And your friend, if it is he or she is your friend, he will be there for you for your entire life. Yes. Now, जैसे कि हमने कहा कि कॉलेज एक बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ स्काई इज द लिमिट है, क्योंकि हम घर से निकलकर हम बाहर खुली फिजा में आ चुके हैं, और अब हम हर फल को तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारी रीच हर उस फल तक है जिसे हम खाना चाहते हैं. अब ये 3 या 4 साल जो कॉलेज करिकुलम के हैं हमारे पास, उसमें कभी कभी हम इतने ज्यादा इजी गोइंग हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं व्हाट इज अ पर्पस. एंड एज सून एज वी फिनिश आवर कॉलेज वी आर इन डिलेमा, वी आर कंफ्यूज्ड, एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, व्हाट टू डू नेक्स्ट. कभी कभी कुछ बच्चों को ये भी लगने लगता है देयर इज नथिंग लेफ्ट इन लाइफ, देयर इज नथिंग टू डू. So how one should take care of the time, which is very very important. Those 3 to 5 years are very very important. तो उसके बारे में कितना सोचना जरूरी है. देखिए, जैसा हमने शुरू में भी बात की कि when you are on your own, you have to be your own monitor. कोई आपके सिर पे डंडा लेके ये नहीं बोल रहा है कि आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है, आपको खुद अपना टाइम टेबल बनाना है. इसके लिए प्रायोरिटाइजेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज अर्जेंट. क्या मेरे को ये काम अभी ही करना है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, ये डिस्क्रिशन अपने अंदर लाना. और उसके अलावा आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज़ वन थिंग दैट वी हैव टू लुक एट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ ऑल्सो अबाउट मॉनिटरिंग योर ओन वीकनेसेस, कि क्या मेरे अंदर वो एक टेंडेंसी है टू प्रोक्रेस्टिनेट. So I need to pick it up right now and pull it, because these 4 years are going to decide the future course of my career. और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में इतना फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, और उस वजह से हम अपनी मेंटल हेल्थ को निगलेक्ट कर देते हैं. कई बारी हमें आउट ऑफ social stigma, out of a lot of things, we don't want to acknowledge that yes, I am going through struggling times. But I seriously feel that if at all you feel that I'm not able to manage a lot of things and things are going out of my hand, identify that early on and reach out for help. Colleges are well equipped with counseling, and the best part about colleges is that you also have peer support groups, where there are seniors, there are mental health societies who are there to talk it out. So
children should make use of that and not let this become a major problem and they, land up into trouble after spending 4 years. So if they are able to hone their skills on their own, well and good. But if not, they should not hesitate to seek support professionally. It means talking, communicating, whatever you feel like. Even if it is negative, don't think he to negative ho gaya, log mere bare mein kya kahenge. At least they will take you out from that particular uncertainty or problem, we would say. Ma'am, one more concern over here regarding the mental health as well as physical health of the students too. अब जब तक घर पर थे, जब तक स्कूल जाते थे, तो एक बंधा बंधाए टिफिन मिलता था. और जब हम यूथ हो जाते हैं, जब हम कॉलेज में आ जाते हैं, तो हम अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर एकदम कहते हैं नेगेटिव हो जाते हैं. नेगेटिव इन द सेंस व्हाटएवर जो मिला वो खा लिया, पार्टी की फ्रेंड्स के साथ, ना सोने का टाइम है, ना किसी और काम को करने का टाइम है. बिकॉज आई हैव सीन लॉट्स ऑफ किड्स जो कॉलेजेस में हैं, पेरेंट्स परेशान है, बच्चा देर तक रात तक उठा हुआ है, जगा हुआ है, ईदर ऑन द सोशल मीडिया साइट्स और ऑन द फोन, या फिर फ्रेंड से चैट हो रही है, खाने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है. ऐसे में जो पूरी हेल्थ है वो डिटेरियोरेट हो रही है, हमने देखा है. एंड वी हैव बीन टॉकिंग लॉट ऑन द ओबेसिटी अमंग द स्टूडेंट्स दोज हु आर इन द कॉलेज. हाउ दे शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स बिकॉज देयर हेल्थ विल be automatically with them through the entire life. Yes, absolutely, and very apt point you've brought about, because जब तक हम स्कूल में होते हैं तो एक बहुत ही डिफाइंड तरीके से लंच ब्रेक होता है, फ्रूट ब्रेक होता है, और कंपल्सरीली हमें उसमें ले जाना होता है अपना टिफिन. कॉलेज में आके कोई इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहता और पेरेंट्स की तो बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहते हैं, तो दे वांट फ्रीडम. And while you're free again, and there is no harm in exploring and looking at trying out different things, but again have that decision making power that what is right for my body, because what we take in directly impacts our thoughts and our behavior. So अगर आप कुछ ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं जो आपकी हेल्थ पे डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. अगर आपकी फैमिली टेंडेंसी है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से आजकल आपने खुद भी इतनी रिसर्च पढ़ी होगी, देयर आर हार्ट डिजीजेस हैपनिंग, देयर इज diabetes happening early in life because we're not taking care of our health. So I think very important to look at what we consume, what we eat, and how we regulate and bring a discipline in our life from an early stage in college. That is very important. Apart from that, कॉलेज में क्या होता है कि ओके आज हम फ्रेंड्स के साथ यहाँ बाहर जा रहे हैं, तो all the junk food, pizzas, burgers, they become a routine. Exactly. And then there is no time. Another aspect that we often see is this whole social media, like you said. There is a certain way I want to look. That's important. Yeah, so I will start starving myself because I want to be the Miss Fresher and I want to be Miss this and that. So I start starving myself, and without us even knowing, we slip into the psychological eating disorders. Whether it is anorexia nervosa or it is bulimia, it is very real now. It is not that somebody else in a very distant Western country has it. Every second child you see is going through some of it. And please understand, I want to tell the students also that your physical health is directly connected to your mental health. अगर हमें ये एक compulsion है to look a certain way, and because of that we are not eating, it is a psychological issue and that needs to be addressed. So इसलिए please अपने खाने पर और अपने sleeping patterns पर शुरू से अगर आप नियंत्रण रखेंगे, तो will not end up into bodily issues and psychological issues. Very true. And because you have raised this important point, we also have seen when we enter into this world called college, यहाँ पर हमारा psychologically बहुत changes आते हैं. We want a good look every time. Yes. Now, some of the kids, for example, they are caught by obesity. Obesity का शिकार हैं, या कुछ बच्चों को pimples बहुत ज़्यादा निकलते हैं, या फिर अपने dressing sense को लेके a kind of inferiority is seen among those students. और वो उससे उभर नहीं पाते. और ऐसे में क्या होता है, जो कुछ वो इजाद
याद कर सकते हैं अपने कॉलेज डेज में, जो कॉन्फिडेंस लेवल रेज कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है. सो सेल्फ एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. And even before that, self love is very important. If you love yourself, others will love you as well. So acceptance is very important. आपका शरीर आपने चूज नहीं किया था, it was a gift of God. Very true. So अगर आप पतले हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, वो आपके बस में नहीं है. आप जो कर सकते हैं कि आप अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं और किस तरह के विचार आ रहे हैं. So that is where you need to regulate it. Apart from that, judging somebody on their body size, on their color, I don't think so it is justice to the human race, because we don't choose the body that we will come in. That is God's Almighty's decision, and we have to respect that. So I think important thing is that children have to be aware that this is, if I'm getting pimples on the skin, or if I'm getting I put on weight in certain parts of my body, it is all hormonal, and it is natural that your body will grow biologically, and there will be some ups and downs of it, but you don't have to put a mask or avoid it to look a certain way or look good all the time. You're good if you are good from inside. It reflects on the outside. But right eating habits will take care of most of these issues as well. And for this, parents need to talk to their kids continuously. Yes. Accept yourself, love yourself. Yes. You are different. That is the most important thing. Absolutely. Thinking that I'm different. Yeah. And one's presentation skills, his or her communication skills is what makes him. His Absolutely. personality makes him. The people will treat you the way you carry yourself. The way you treat yourself, the world will treet you in the same manner. Absolutely. There is no denying to that, because half the time what happens is that I, start kind of, demeaning myself, and how will I get the confidence? So my self-esteem goes down. I don't have the confidence to speak in front of the other person. So they start believing that, they start seeing you in low light, and that is like a vicious cycle that further downs your confidence. So first important thing is to accept the person that you are, and keep working on your shortcomings. It is not that everybody is perfect, but then if you're aware and you're working on it, I'm sure you will overcome that and build that into your strength as well. Exactly, and one needs to polish at whatever stage of life we are in. We need to polish ourselves every time. Even if we have not very good communication skills, then we read, and read. We talk to lots of people. We try to listen to good people, and all of us are learning at every point of life. Now, ma'am, my concern is for those students who are preparing for the competitive examinations. You yourself are aware that in our country only there are lots of competitive examinations for higher grades. And not every student is capable of cracking the examinations. True. If thousands of students are appearing for one particular examination, or lakhs of students are appearing, we know that only 10, 20, 50, 100 or 1,000 seats are available. And with some students it happens, बहुत सारे efforts कर लिए, बहुत सारे बार attempt कर लिया, even then they meet failure. और ऐसी condition में जब हमने mental health की बात भी की है, so suicidal attempts, they are the worst, because your life is very very important. This is what we need to take care of. अगर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, तो जो जिंदगी आगे बची है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो चांस तो हमने फिनिश कर दिया. बिल्कुल. So for that, what you want to say to the students? I think a very important point ma'am has raised, and it's very easy to find the escape route. Whenever you meet a challenge and you want to avoid, the easiest way is to cut that out from your life, or cut the life out of it as well. But that is not the solution. If you are a courageous person, you got to take it by its horns and turn it around. आप अगर किसी फेलियर, आप अगर देखेंगे जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हैं, वो सब फेलियर्स पे बिल्ट हैं. सो कोई भी सडनली मुकेश अंबानी या रतन टाटा नहीं बन गया था. दे ऑल हैव सीन देयर स्ट्रगल्स, एंड यू नीड टू बी अवेयर about the process and not the destination. So in that process, there will be multiple areas which will not work out. But you have an intelligent mind to find a different way and move on. यहाँ पर मैं एक छोटा सा analogy आपको देना चाहती हूँ कि जैसे एक नदी है,
नदी बहती है पहाड़ों से गुजरती हुई, प्लेन्स में आती है और सडनली एक बहुत बड़ा पत्थर उस पर आ जाता है। नदी मगर अपना बहना नहीं रोकती, वो अपना रास्ता बदल लेती है लेकिन कंटिन्यूअसली बहती है। उसी तरह से एज एन इंडिविजुअल हमें रुकना नहीं है, हमें रास्ते कई मिल जाएंगे. So there is no dead end, there is no block that if you have not been able to achieve plan A, now nothing is possible. You can maneuver your way from the side and find another which is your plan B. So नदी की तरह बहते रहना is very important. Very, very important. Now another question is regarding the kids, और I would say मैं ये भी कह सकती हूँ इसको कि कभी कभी हमारे पास कुछ कंट्रोल सिचुएशंस होते हैं, कुछ अनकंट्रोल. वो कंट्रोल सिचुएशंस पेरेंट्स के लिए हैं पर किड्स के लिए नहीं. इन टर्म्स ऑफ सम किड्स हैव डिस्टर्ब चाइल्डहुड और वो उनके साथ उम्र भर चलता है और कहते हैं कि जीवन में हमारा बचपन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम स्कूल में होते हैं. ऐसे में अगर वो बचपन खराब हो जाए ना तो हमारी शायद पूरी कहते हैं ना पूरी जिंदगी खराब हो जाती है क्योंकि वो चीज हमारा टेम्परामेंट बिल्ड करती है या उसे डिस्ट्रॉय करती है. So a kid cannot control that situation, but parents can. How important is to understand? हर पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना होगा कि बच्चों के आगे जब आप लड़ते हैं, जब आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, आपने अपना एग्रेशन वहां पर कंट्रोल कर लिया एक दूसरे को कुछ कह के स्पाउस को, लेकिन what you have given to your kid. That is what we feel, that children observe and absorb. It is आप जो बोल रहे हैं मुंह से उसका उतना इम्पैक्ट नहीं है, जो वो देख रहे हैं उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है. सो कई अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस लाइफ में आती हैं जहाँ पर पेरेंट्स के बीच में टिफ होता है. सो एज चिल्ड्रन ऑफ कोर्स दे ऑब्जर्व इट, दे लर्न इट. However, if the child builds on towards maturity, तो कहीं ना कहीं वो इस सही गलत का भी फैसला कर पाता है बड़े होकर कि शायद जो मेरे पेरेंट्स ने किया मुझे वो नहीं करना है, rather than following their footsteps and not trusting. बहुत सारी केसेस में हमने ऐसा देखा है कि इस तरह से बच्चे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और उनके रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं हो पाते हैं. लेकिन मैं ऐसा ही उनको इसीलिए ये बताना चाहती हूँ कि इट इज़ नॉट अबाउट वॉट योर पेरेंट्स डिड, इट विल द सेम थिंग विल हैपन टू यू. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर वे ऑफ हैंडलिंग. कई बारी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ये होती हैं जो हमें सिखा जाती हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए. सो वो शिक्षा अगर हम ले लें उस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से और उसको अपने लिए पॉजिटिव बना लें तो लाइफ कैन बी ब्यूटिफुल फॉर द चाइल्ड. And how we tackle a situation that makes a difference. Problems दुनिया में सबके पास है, but how we acted, हमने कैसे उनका solution निकाला, that will make us different. And also, sometimes I feel that some parents have this that घर की problems बच्चों के आगे मत बोलो. उनको नहीं बताओ. They should be left away from this. Whereas I feel on the contrary, you must discuss. Exactly. Because if you are going through a problem, how you have handled it, how you have tackled it, that will help the child do problem solving in his life later. So it's so very important to share and build that family communication where you make life real for them and not a bed of roses. Very true. Yeah. Very true. So half of your childhood is created by your parents as well as the school, and the later half by the college. Yes. So what do you like to say to the students who would have watching us or would be watching through our YouTube channel, as we have less time left? So in your words, ma'am. Sure. So I think you all are embarking on a beautiful journey, and the excitement is much higher than apprehension. So what you were in school is now going to prep you up for what you will be in college, and from here on sky is the limit. So take your flight and move ahead. Make your, like ma'am said, the canvas is all open. How you draw it depends upon you. Take your past learnings, add on new learnings, and shape up your personality for the better. All the best to all the children. With this note, thank you, ma'am. Thank you so much for giving us this session, and I believe that this session is going to be with me through entire life, and I would be carrying forward whatever you have discussed here, and I would be transmitting it further so that I could also be one of the person who could make positive change in the society. I'm so glad to be here on the show with you, and talking with you was immensely enriching for me as well. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, dear friends, we would be posting this lecture on YouTube very soon for you.
Watch the lecture. If you have any queries, do write to us at cecgurukul.live@gmail.com. We would be meeting again next Thursday. Till then, take care of yourselves. Thank you so much.